Now student, the next type of the technique of presentation of data is tabular presentation of data. Tabular presentation of data, this is the systematic form of presenting the data in rows. Different rows and columns are there. So the information is presented in different types of tables. That is, table should be made, and in that table there are different rows and columns are there. So the information is right according to the rows and columns. Now what is tabular presentation? A statistical table is a systematic organization of data in columns and rows. Tabular presentation means when we are presenting our information, statistical data in a table, and it is a systematic organization of data in rows and columns. Columns and rows are there. So what are the components of a table? Table में क्या क्या components होते हैं? This is the format of a table. That is, on the top of the table number is written. Then title of the table is written. Then subheads, columns are there, and these are the different rows, different columns are there. So what was the component of a table? The component table is, first of all, table number should be there. If we are making more than one table, so the table number should be given, that we are making 4 table, 5 tables, 10 table. So every table must be having table number, and it will be written on the top of the table. Next is title. Next thing should be there in the table is title. Table must be having some title or some heading will be there. Without title the table is not complete. टेबल में टाइटल होना जरूरी है, जो कि हम टेबल नंबर के नीचे लिखेंगे. नेक्स्ट इज हेड नोट. हेड नोट, दिस व्हेन द टाइटल ऑफ द टेबल इज नॉट प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, तो इसमें हमें अगर एक और टॉपिक की जरूरत है, एक और टाइटल की जरूरत है, तो वी आर राइटिंग हेड नोट which is supporting to the title. Now stuffs and column. Stuffs and captions are there. Stuffs, steps means when we are giving heading to the that rows, so it will be, that is, stuffs are there. And when we are captions, that when we want to give some heading to the columns, so it is the captions should be there. Body or field. Body or field, that is the main part of the study, that is in different rows and column. Whatever the information we are presenting is known as the body of the table. Body or field. Now footnote. At the end of the table we are writing footnote. Footnote is not necessary, but sometimes footnote is needed when we have to present, when the information we have given in the table is not complete, then they require some more information, तो हम footnotes के through हम वो information को बता सकते हैं. That is at the end of the table. Then source of information की हमने जो ये table बनाई है उसमें हमने जो information collect की है, from where we have collected, whether we are using the primary data or whether we are using the secondary data. तो सेकेंडरी डेटा अगर हमने लिया है तो उसके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, हमने कहाँ से किस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, दैट इज वी हैव टू गिव, दैट इज source should be written at the end of the table, that is the source of information from where you have collected the information. So this will be the components of a table, and this is the format of a table. When you want to make when you want to present your data in tabular presentation, so you have to make the table, and the table must be having each and every components which is required. So the table should be made according to the requirements of the table. एक table तभी complete मानी जाती है जब उसमें सारी चीजें जो उसकी components है वो सारे present हो. So this will be the components of a table. Now the features of a table. You can make different types of table, but a table should be good one only. A good, there are, because when the table must be having some qualities, so there must be some qualities of a good table और some features of a good table. जब भी आप कोई टेबल बनाएंगे तो टेबल ऐसी होनी चाहिए कि आपको easily understandable हो, आप उसको अच्छे से समझ सकें. उसमें जो columns और rows बनाए गए, information should be put up accordingly. So there must be having some qualities of a good table. Now what are the qualities or features of a good table? So first is compatible title. टेबल का जो टाइटल है इट शुड बी कंपैटिबल वन, बिकॉज द टाइटल मस्ट सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबल. हमने जो टेबल बनाई है उसके पर्पस के लिए बनाई है, तो वो टाइटल उससे सूट करनी चाहिए. टाइटल ऐसा हो कि वो ऑब्जेक्टिव को बता सके, तो टाइटल मस्ट बी कंपैटिबल, टाइटल शुड बी देयर. नेक्स्ट इज कंपैरिजन. व्हेन यू मेक द डेटा कंपेयरिंग विद वन अनदर, अगर हम एक डेटा को दूसरे से कंपेयर करना चाहते हैं तो इट शुड बी रिटन प्रॉपरली इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम, तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. तो कंपेरिजन इज नीडेड इन टेबल. टेबल में बना करके हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, बट कंपैरिजन को हमें प्रॉपर रोज और कॉलम्स में लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट स्पेशल एम्फेसिस.
इफ वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वी आर प्रेजेंटिंग, अगर हमें उसमें कुछ स्पेशल एम्फेसिस प्रेजेंट करना है तो हमें उस कॉलम्स या उस रोज की हेडिंग्स देनी पड़ेंगी, एंड फ्रॉम दैट स्टब्स और कैप्शंस आप उसके अकॉर्डिंग उसको स्पेशल एम्फेसिस प्रेजेंट कर सकते हैं. Ideal size. Table should be of ideal size one, that it should not be too large or should not be too small. टेबल हम जो बना रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो प्रॉपरली उसमें कंप्लीट हो जाए, बट ऐसा ना हो कि टेबल हमारी बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और टेबल बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी आइडियल साइज, तो टेबल का साइज जो है वो आइडियल होना चाहिए. नेक्स्ट इज हेडिंग. एवरी टेबल मस्ट बी हैविंग सम हेडिंग. हेडिंग इज रिक्वायर्ड. किसी भी टेबल को अगर आप टेबल बना रहे हैं तो उसमें हेडिंग देना बहुत जरूरी है, ताकि हेडिंग से ये पता चले कि आप किस चीज की टेबल बना रहे हैं. नेक्स्ट इज एब्रीवेशन. एब्रीवेशन इज नॉट नीडेड इन table. That is when you are making your presentation in tabular form, so no need of any kind of abbreviations or no need of writing any short forms. में short forms को avoid करना है, कोई भी abbreviations या short forms आपको नहीं देने हैं. Next is footnote. Footnote when it is needed it should be given. Footnote अगर हमें जो हमने information दी वो complete नहीं हुई है तो हमें एक footnote देना पड़ेगा, that is additional information, but it is not required, it is not necessary. अगर ये जरूरत हो तभी हमें देना है, otherwise इसकी जरूरत नहीं है, and it should be written at the end of the table. Units. Suppose our data will be presenting in a quantitative form and the quantitative values are very large, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म्स में या फिर हम उसको यूनिट्स में देख सकते हैं. लाइक हमें अगर थाउजेंड्स में देना है तो हम जीरो से उतने जीरो लगा करके, या हमें लैक्स में बताना है अपनी डेटा को, तो हम उसको यूनिट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड यूनिट शुड बी रिटन इन द प्रॉपर हेडिंग्स एंड दैट प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स. टोटल. Total means if the table is having some total, so total must be there, and grand total is also mentioned in the table. Next is source of data. Source of data means आपने जो टेबल बनाई है, टेबल में इंफॉर्मेशन पुटअप की है, वो डेटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया, उसके सोर्सेज क्या है. वेदर यू आर कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा के क्या क्या सोर्सेज से, वेदर इट इज पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज, एंड फ्रॉम वेयर यू हैव कलेक्टेड. सो दिस सोर्स इज ऑल्सो नीडेड. नेक्स्ट इज साइज ऑफ द कॉलम. साइज ऑफ द कॉलम शुड बी प्रॉपर, इट शुड नॉट बी टू लार्ज. अगर आपको बहुत सारे कॉलम्स बनाने टेबल में तो कॉलम साइज का कॉलम इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी सिमिलर. ऐसा नहीं कि एक कॉलम आपने बहुत बड़ा बना दिया, एक बहुत छोटा बना दिया. एंड कॉलम्स शुड बी लाइक दैट कि द टेबल शुड कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाए, ऐसे हमारे कॉलम्स होने चाहिए. देन सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव. Whenever you want to make a table, the table should be simple one, ताकि हम easily इसको समझ सकें, and it is economical also. उसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए. टेबल ऐसी बने जो कि हम economical हो, not be too much expensive, and it should put up every information, and attractive भी होनी चाहिए. Table must be attractive also. So these are the features of good table, and these are the components of a good table. Tabular presentation, you know, it is a very good method of presenting our information, presenting our data systematically. जब भी हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हमें जब एनालाइज करना होता है तो उसके लिए अगर हमें टेबल की बहुत जरूरत पड़ती है, बिकॉज इन टेबल्स रोज एंड कॉलम्स आर देयर, एंड दीज रोज एंड कॉलम्स आर वी आर पुटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली, तो हमें इन्फॉर्मेशन को समझने में ईजी हो जाता है और हम उसका रिजल्ट अच्छे से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, सही रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं. सो whenever we want to make a table, तो उसमें ये क्वालिटीज होना जरूरी है. दीज आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ टेबल, और दिस विल मेक द टेबल अ गुड टेबल. एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल. टेबल में सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, एंड इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी इकोनॉमिकल, एंड इट शुड बी अट्रैक्टिव.